So वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि A is a 3x3 matrix. A is a 3x3 diagonal matrix. That means all the non-diagonal entries are zeros with integral entries. That is, all the diagonal elements are integers, such that det A is equal to 120. You are asked to find the number of such matrices. Let us try to solve this. So it's a basic PNC question which connects the chapter with matrices. So दिया है कि A is a 3x3 diagonal matrix. That means it has 3 non-zero elements A, B, C, and all the remaining elements are zeros. So this is a 3x3 diagonal matrix. So my matrix A should be of this form. So अगर if A is of this form, what is det A? Det A आप कैलकुलेट करिए इसका, you'll get this as A into B into C, A into B into C, and it is given as 120 in the question. So det A is nothing but A, B, C should be equal to 120. So now this is a basic PNC question where you need to find the possible ways in which you can have the product of three numbers as 120. तीन नंबर्स ढूंढना है ए बी सी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 120. सो कितना अलग अलग तरीके से ए बी सी ढूंढ सकता हूं, ठीक है. सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है. सो मान लीजिए ए इज ए नंबर, बी इज ए नंबर एंड सी इज ए नंबर. ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 120 आना चाहिए. 120 इज नथिंग बट आप देख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 8 इंटू 5 इंटू 3. So my 120 is 8 5s are 40 into 3. So the prime factorization is 2 cube into 3 power 1 into 5 power 1. So तीन numbers को multiply करने पे आपको 2 cube 3 power 1 into 5 power 1 आना चाहिए. So let us apply the logic. The first logic is each of this number has to be made of 2, 3 and 5. उससे extra prime factors हो नहीं सकते क्योंकि कोई भी number में 2, 3, 5 को छोड़ के एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर है तो वो प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट में भी आएगा, बट प्रोडक्ट में यू हैव ओनली 3 प्राइम फैक्टर्स. सो द फर्स्ट लॉजिक इज ईच एंड एवरी नंबर आउट ऑफ दीज 3 शुड बी मेड ऑफ ओनली 2, 3 एंड 5. सो फर्स्ट नंबर को मैं 2 पावर सम अल्फा 1, 3 पावर बीटा 1, 5 पावर गामा 1 मानता हूं. So let us take that the first number is made of 2, 3, 5. There are alpha 1 2s, beta 1 3s and gamma 1 5s. Let the second number be 2 power alpha 2, 3 power beta 2, 5 power gamma. And the third number be 2 power alpha 3, 3 power beta 3 and 5 power gamma 3 मान लीजिए. So now आप इस तीनों को multiply करने पे you have to get this. So once you multiply these three, what is the number you get? 2 power alpha 1 into 2 power alpha 2 into 2 power alpha 3. So you get 2 power alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. So this has to be equal to the 2 power of this. So आपको equation क्या है? Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 has to be equal to 3. That's the first condition. The second condition is beta 1 plus beta 2 plus beta 3 is equal to 1. The effective number of 3's in the product has to be equal to 1. And the third equation is gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 is equal to 1. Okay. So ये भी होना चाहिए and this should happen and this should happen. ठीक है. And alpha 1, alpha 2, alpha 3 has to be whole numbers. You cannot have negative numbers because prime factorization में the powers are always whole numbers. They can be 0, 1, 2, 3, so on. So how many non-negative integral solutions does this equation have? This is same as Beggar's problem in PNC. ये PNC में Beggar's problem है. फॉर्मूला क्या है? n plus r minus 1c r minus 1. ठीक है. हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या है? x1 plus x2 plus x3 plus so on up to xr is equal to n. If you have this equation, number of non-negative integral solutions are given by n plus r minus 1c r minus 1. This is the formula that you have written. So इसके लिए alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 is equal to 3 में n 3 है, r is 3. So how many solutions does this have?
3 plus 3 minus 1C, 3 minus 1. That is 5C2. That is 10 solutions. So alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. We can have 10 different solutions to this equation. Similarly, second equation, the kitna solutions hai? 1 plus 3 minus 1C, 3 minus 1. That is 3C2. That is 3 solutions. Second equation has 3 solutions. And the third equation also has 3C2. That is 3 solutions. So now I want this and this and this. ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए simultaneously. So this can happen in 10 ways, this can happen in 3 ways, this can happen in 3 ways. So in how many ways can this and this and this can happen? Basic multiplication theorem hai. So you have how many options for A, B, C? So A, B, C के लिए आपको 10 into 3 into 3, that is have 90 options for different values of A, B, C. When I have assumed that A, B, C are positive. ठीक है, आप हम माना कि A, B, C are positive, but क्वेश्चन में क्या दिया? A, B, C have to be integers. इसका मतलब नेगेटिव भी नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं. So और A, B, C are positive है तो you can have 90 different entries of A, B, C. Now मान लीजिए अगर नेगेटिव एंट्रीज आर ऑल्सो पॉजिटिव, फाइनली आपका कंडीशन क्या है? A into B into C has to be 120. So अगर नेगेटिव नंबर्स अलाउड है तो देखते हैं. So तीनों पॉजिटिव है तो if all A, B, C are positive, you got 90 different options in which I can put these numbers. दो नंबर्स पॉजिटिव, एक नंबर मान लीजिए नेगेटिव. अब ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 120 आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट नेगेटिव आया. So 2 numbers positive, 1 number negative में you won't get any solutions. 1 number positive, 2 numbers negative. इसमें भी आपको solutions आएगा. ठीक है, so इसमें कितना solutions आएगा? For each option plus minus minus के लिए 90 options आएगा. Plus first number minus second number plus third number minus के लिए एक और 90 options आएगा. माइनस माइनस प्लस के लिए एक और 90 ऑप्शंस आए. समझ रहे? द फर्स्ट नंबर नेगेटिव, सेकंड नंबर नेगेटिव, थर्ड नंबर पॉजिटिव. यू हैव 90 ऑप्शंस. सेकंड नंबर पॉजिटिव, these two are negative, you have 90. This is positive, these two are negative, you have 90 options. So you have total of 360 till now, and all negative options हो सकते हैं. अगर तीनों नेगेटिव है तो the product will be negative, it won't be positive. So आपको टोटल कितना सॉल्यूशंस है? हैव ए टोटल ऑफ 360 सॉल्यूशंस, हैव 360 ऑप्शंस. सो नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस आर 360. थैंक यू.